Hello everyone, welcome to this fifth episode of Behind the Ink. Today we'll be discussing with Dr. Aafreen Kotadiya, uh, an author, a doctor. So let me just send an invite to her and wait for her to join. Okay, I can see Dr. Aafreen Kotadiya has joined. Yeah. Hi, Hello, hello ma'am, how are you? I'm good. How are you? I am good. I am good. First of all, thanks for agreeing for this interview. I've seen your page. I followed some of the news as well, and you have given a lot of interviews to television as well, and you do a lot of work in your medical areas as well. So first of all, thanks a lot for joining. Um, It's all my pleasure. Thank you, thank you. So we'll start with. I guess the reason why I reached out to you for this is because I get to learn a lot about from your experience as well. So we'll start with something about you, like how did you start this author journey, and you being a doctor, how is that influence? So we'll start with a brief introduction of you, and then we'll jump into the questions. Okay. So, being an author was like a dream come true for me. मेरा कैसा था पता है? When I was in school, I always wanted to write, Okay. and I had started writing my poems. A lot of poems I wrote back then, when I was just in my eighth class, ninth class, 10th class. So I had an entire collection of poems written by me, almost 60, 70 poems. तभी हो गया था. So you can imagine how much I took to writing back then itself. But then I had no guidance or any kind of drive to publish it back then because things were in a very nascent stage. Yeah. Then what happened is life happened. So I had to, prepare for the NEET after my 11th, 12th, got into MBBS. So वो सब पीछे छूट गया. बीच बीच में वो उभर उभर के आता कभी कभी अगर कोई इंस्पिरेशन आ गई तो सो वो पोएम्स का काउंट अभी 80-90 तक ही पहुंचा है इतने सालों बाद भी. But I can tell you so much कि at least I knew that I had it in me and I wanted to do something more about it maybe when I actually had the time. So then what happened is COVID. Right. सबको पता है. Everybody had a lot of time except for us. We were the COVID warriors, and that was kind of very intimidating for us, especially because my child was just 1 year old at that point. So I still had to go to work. I had to, do my duties very diligently. And when I come back home, I know I have to be very careful so that I don't spread the infection. But what happens is कि किसी और को लगा नहीं मुझे ही हो गया 2 बार. you know and it was so sad because at that point I couldn't even work and I couldn't even tend to my child. So वो बंद कमरे में करना क्या? So I was so scared, and I was I just wanted to keep my hopes high. So what I did at that time is I picked up my laptop and I said, chalo, let's write. I can't study at this point in that kind of a state. I can't do anything beside getting depressed. So let me just channelize my energy somewhere else where I can actually, do that, something constructive about it. So I started writing my book called Ma Don't Go. Okay. Yeah. So what happened is almost around 60-70% of the book I penned almost in my first and second phases of COVID waves. And हर एक wave में मुझे एक एक बार वो हुआ था. Okay. So when I was writing it, I knew कि ठीक है इतना सारा लिख दिया publish तो करना है कभी ना कभी. So then I finished it up once my MD was over, and then finally I had the chance to have this baby of mine in my hand. मतलब एक एक बच्चा ही है ना, उसको मैंने इतना नाज प्यार से लिखा है, सवारा है, उसके पीछे इतना टाइम, मेहनत, पैसे सब डाला है, just like how we do for our babies. So it's very close to my heart that way. तो जो आपने अभी इतना ब्रीफ दिया है, इतना वंडरफुल एक्सप्लेनेशन आपने दिया, उसमें मुझे कम से कम 1000 क्वेश्चन है अभी. अच्छा तो So बताओ. let me take you back to, you said that you started writing when you were in school. So where was the inspiration coming? Like you were writing poems, you were writing
So the poems you were writing, were they about what? Like you were writing poems about how you're feeling in those general days, or like general. So what were the topics of those poems? And has it come from your parents, like your father, your mother? Um, where is this inspiration for you to write came during that phase before your during your school? So you wouldn't believe, actually, the inspiration came from Oxford Dictionary. Yeah. My favorite book was Oxford Dictionary back then, because I wanted to learn more and more words and hone my vocabulary. Obviously वो स्कूल में तो काम आ ही जाता है in my English subject, but apart from that it did give me a sense of, you know, blossoming. You know, एक flower जैसे blossom करता है. I wanted to, you know, really hold on to that. तो कोई भी एक word मिल जाता ना, मैं उस पे पकड़ के पोएम बना देती. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ वर्ड कॉल्ड एनकम्बरेंस. डू यू नो द वर्ड एनकम्बरेंस? द मीनिंग ऑफ इट इज हेल्पलेसनेस. ठीक है. तो अब ये वर्ड तो किसी ने सुना ही नहीं है. नहीं. ठीक है, तुमने खुद नहीं सुना है, बीइंग एन ऑथर. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यू नो हम कैसे एक एक चीज पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर सोचने लगते हैं कि यार, हाँ यार, इफ आई स्टार्ट यूजिंग दिस, प्रॉब्ली पीपल ऑल्सो माइट गेट एजुकेटेड अबाउट दिस, एंड मेरा उसमें भावनाएं भी निकल जाएंगी. दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो ऐसे कुछ भी लिख देती थी फिर मैं. एक था, देर इज अ वर्ड कॉल्ड पेरिग्रिनेटर. डू यू नो द वर्ड पेरिग्रिनेटर? पेरिग्रिनेटर मतलब एक समझो ना, ऐसे परिक्रमा करना. जैसे हम भगवान के बारे में सोचते हैं, पेरिग्रिनेटर. ठीक है. तुमने भी सुना नहीं होगा वो वर्ड. मैंने भी ये वर्ड मैंने कब पढ़ा था पता है? ऑलमोस्ट इट वुड बी से इन 2003 और 4 मे बी 4. और सो आपने, ये सब. हाँ, सॉरी. ये वर्ड्स आपने उस टाइम से पढ़े, ये वर्ड्स अभी तक आपको याद है, अभी तक आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने? क्योंकि ये मैंने अपने पोएम्स में एक एक की तरह पिरोए थे ये सब वर्ड्स. यू नो, सो यू कैंट रियली फॉरगेट इट इफ यू एक्चुअली यूज दोस वर्ड्स. ठीक है. अच्छा, देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड ज़ीफिर या ज़ेफिर, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट एज. डू यू नो द वर्ड? ZEPHYR. ओके. दिस इज इनफैक्ट अ कॉमन वर्ड. तो ये इसका मतलब है कि हवा का ठंडा झोंका. यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो मैंने एक पोएम पूरी ज़ीफिर पे लिख डाली. सो यू अंडरस्टैंड ऐसे हम क्यों नहीं लिख सकते? एक वर्ड ही काफी है टू, यू नो, फॉर यू टू लेट ओपन योर इमेजिनेशन एंड गिव यू दैट फीलिंग व्हाट दैट वर्ड एक्चुअली मीन्स. सो दैट इज व्हाट इट वाज. अभी आई एम excited to read your poems. Now I am excited to read those poems. Are those poems published anywhere, or कहीं आपके पास नॉट ही है येट. अभी वो? नॉट येट. अभी अभी मेरे भी पास आपने? है, बिकॉज पोएम्स का ऐसा था ना कि सी, देयर इज अ वेरी लिटिल, you know, limited people who still value poems in these times. बहुत कुछ है मार्केट में, मतलब there are many published and well known authors who are poetesses and poets. So कभी ऐसा डर भी लगता है कि मेरी कौन पढ़ेगा, या फिर उनको कनेक्ट नहीं हो पाया. तो it's not that कि I have some phobia against it, but I really wanted that to come out as a, you know, as a dessert, not a starter. So this is my starter, and that would be a dessert तो probably. starter के बाद you'll have like a 7 course meal, no? So dessert. हाँ, तो वो भी तो होना चाहिए ना, उसके बिना पेट नहीं भरेगा. अभी अभी क्या हो रहा है? सो आई हैव पब्लिश्ड फ्यू बुक्स. अभी मेरी मेरी रिसेंटली एक बुक आई है. सो द थिंग विच आई एम थिंकिंग इज आई हैव टू राइट मोर. जैसा भी Yes. आपने बोला, heard these 3 words. I haven't heard those 3 words. In fact, आप तो बिलीव नहीं करेंगे कि मैं मेरी किताब लिखने के बाद एडिटर को भेजता हूँ ना, और वो मुझे वापस भेजता है, तो ऐसा लगता है किसी और ने लिख दी किताब. तो एडिटिंग में Oh, है ना, वो बहुत वो हो जाता है. तो मैं ना, मेरा थिंकिंग प्रोसेस है कि मैं बस जो आता है मन में लिख देता हूँ. मतलब मैं एडिटिंग पे ध्यान नहीं देता. तो इसीलिए मैं वर्ड्स के ऊपर भी ध्यान नहीं देता. बट आपने जो अभी ये बात बोली है कि राइटर्स है, या जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, या एकदम मतलब मेरे जैसे राइटर्स हैं, जैसे भी राइटर्स हैं, अगर वो एक वर्ड को लेके भी अगर उसके ऊपर सोचे और इमेजिनेशन बनाए, तो उससे भी बहुत कुछ वो सीख सकते हैं. तो yeah. आपने स्कूल ये जो पोएम्स बनाई थी, इससे आप, ये आपका पहला स्टेप था. उसके बाद Yes. मैं
एमबीबीएस और एमडी तो मतलब बहुत डिफिकल्ट जर्नी रहता है। फिर आप अभी अभी आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, जैसा आपने बताया कोविड के टाइम। तो where do you get time to, and I know you are doing some other activities also. I'll touch base on that as well. So where do you get time to continue with this passion? टाइम किसी को नहीं मिलता, सबके पास 24 घंटे हैं, टाइम बस निकालना पड़ता है। सही। तो बोलो ही मत कब मिलेगा, जब मिलेगा यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट एंड यू हैव टू गो, because if you leave that then you have a missed opportunity and a lifetime of regret. So might as well जो मिल रहा है वो ले लो, खुश रहो, don't leave any moment. If you are passionate about something definitely कर ही लेते हैं कैसे भी। Yeah, definitely. I think this is spot on. I mean, passion and that missed opportunity is completely spot on. So आपकी आपकी बुक है, एक बार दिखाइए अपनी बुक। Here you are. डोंट गो माँ। Ma, हाँ। सो don't go. Yes. इसके बारे में बताइए। So as you can see यहाँ पे क्या लिखा है, chronicles and reflections of super doc mom struggles, triumphs and survival. So what it was is दिख रहा है तो दिख ही रहा है, पर हाँ अभी आपने पढ़ा तो बताया। तो इसके बारे में बताइए, बुक के okay. बारे में। So what it was basically is, uh, you can understand that being a doctor in today's world is very challenging. There's a rat race going on in, ठीक है वो सभी fields में है, no doubt, but for doctors especially after COVID it became very intimidating, isn't it? After that, imagine being a woman and imagine a woman being a mother. So imagine having all those roles put into one box, एंड वो इतना एक छोटा बॉक्स होता है जिसमें आप बहुत सारी चीजें स्टफ करते जाते हो ना, उसके लिए भी मुश्किल होता है ओपन, राइट? बुस्टिंग मैनेजिंग आवर रोल्स परफेक्टली, दैट इज व्हाट इज देयर इन दिस बुक, बिकॉज लोग हमसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। एज अ मदर माई चाइल्ड विल एक्सपेक्ट टाइम फ्रॉम मुझसे कि मैं उसके साथ बैठूं, उसको चीजें सिखाऊं, उसको खाना खिलाऊं, नहलाऊं धुलाऊं, एवरीथिंग आई शुड डू फॉर हिम। माई फैमिली विल एक्सपेक्ट मी टू बी अ गुड वाइफ, अ गुड होम मेकर एंड ऑल दोज थिंग्स। माई workplace people will expect me to be a good doctor, an ethical one, who is disciplined on time, not doing anything which is against the policies of the institute, so many things. तो वो सब कुछ साथ लेके चलना कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक इंसान के लिए at that same very moment. We everything is like a Venn diagram. It's interlinked. उसको इस इंटरलिंकिंग में खिचड़ी ना हो जाए तो हम कैसे उसको जो साथ लेके सबको चलते हैं, और उसमें हमको खुद को क्या आता है प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन, नो? हमको भी तो कुछ आशाएं होती है, कुछ ख्याल होते हैं, कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं। उन सबको हम कैसे आगे चल के साकार करेंगे, complete with all these roles. So that is what is put into this book. Okay, I mean that's very important and powerful topic. एक आदमी को लेते हैं जो कि डॉक्टर है, और जिसकी फैमिली है, और वो किताब लिखना चाहता है या चाहते हैं, तो आपको लगता है उनके लिए थोड़ा इजी है सोसाइटी में ये सब चीजें करना, अगेन कंपेयर टू अ वुमन लाइक योरसेल्फ? I didn't get the question, sorry. नहीं, तो बेसिकली व्हाट आई एम आस्किंग इज, आपने इतना अच्छे से आपने बताया कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ होम मेकर, all of these roles have different expectations from you. So what I'm asking is, and that is what you have put in the book as well, ना? तो मैं क्या पूछ Yeah, रहा हूँ yeah. आपसे, कंपेयर टू यू एंड योर रोल, अगर कोई आदमी ये करे जो कि एक डॉक्टर है, जिसकी एक फैमिली है, जो कि बुक लिखना चाहता है, आपको क्या लगता है कि उस आदमी के लिए ये इजी है लिखना, वो सेटअप इजी है कंपेयर टू वुमेन, या फिर ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है? Comparison कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, depending who on who you're asking. There is a person who is often,
I wouldn't say orthodox, but a person who is of a traditional mindset, वो सोचते हैं कि घर पे आने के बाद में, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप फादर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, घर पे आने के बाद में उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी नहीं रह जाती, तो आप घर पे आके थोड़ा बैठ के आराम कर सकते हैं टू गियर अप फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ वर्क. सो मे बी इन दैट टाइम दे कैन चिप आउट सम टाइम टू गो एंड राइट समथिंग. सो उसके लिए शायद इजी हो जाएगा. अच्छा, देर इज अनदर पर्सन. हम अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें और ऐसे सोचे कि देर इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वालिटी, इन लिबरलाइजेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इज अ फेमिनिस्ट, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, तो वो शायद उतना टाइम निकालना पॉसिबल ना हो पाए. सो डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग एंड हु इज एक्चुअली गोइंग टू बी डूइंग इट. राइट. वैसा है. बस सोसाइटी इन जनरल में आप बोल रहे हो कि इट स्टिल डिपेंड्स कि जनरल सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है. इज इट इज आई थिंक. जनरल इंडियन इंडियन माशरे की आप बात करेंगे ना तो यू नो द आंसर. आई डोंट हैव टू से. आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्योंकि जो आपकी बुक है वो इस चीज को बाहर लेकर आती है कि अपने देश में अभी भी उतनी इक्वालिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. और book in questions को raise करती है. ये the book asks these questions that why there are some rules for men and other rules for women. So I think this is very important topic. तो जो आपने लिखा है, this is in form of a story या fiction है या non fiction No, है? What is? this is non-fiction. There are several aspects which have been addressed, which a woman would, think about deeply. जैसे for example, अगर मेरा बच्चा बीमार है, अच्छा चलो बीमार तो बाद में हो जाएगा, that would be once in a lifetime, once in a few months का thing. But for example, अब मुझे सुबह सुबह उठ के काम पे जाना है, ठीक है, बच्चा मेरा सो रहा है. ये मैंने तब लिखा था जब वो स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, तो उसको उठाना नहीं पड़ता था. So if he's sleeping beside me and I still have to go get up early and rush to work, how do I do that without making noise, without letting him get up and panicking at the start of the day कि mummy is going, so उसी पे अगर वो कब So imagine a child is there who you love so much. He's very cute. He has very, big crying eyes. And वो बोले मम्मी मत जाओ ऐसे, तो फिर आप क्या सुनोगे? मतलब अपने काम की, अपने दिल की सुनोगे, माइंड की सुनोगे, या दिल की सुनोगे कि बच्चे के पास रह जाऊं मैं? वो एक औरत ऐसे फंस के रह जाती है वहां अच्छा पे. मैम. सो नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, खत्म करिए. हाँ, तो नहीं, लिंक तोड़ दिया तूने अभी. ना ना, यू कैन, व्हाट वर यू आस्किंग मी? थोड़ा थोड़ा आपका आवाज है. प्रॉब्लम शायद विद द ऐसा आपके. sound? हाँ, Is there a problem with the sound? आपके Okay. साउंड में अटक रहा है. आई थिंक इट्स ओके नाउ. तो अच्छा, तो okay. मैं आपसे पूछने वाला था कि अभी आपकी किताब को पढ़ के अगर 100 औरतों ने डिसाइड किया कि अभी वो खाना नहीं बनाएंगी, हमको इक्वालिटी चाहिए, तो उनका घर भर में प्रॉब्लम चालू हो गया, तो फिर उसमें क्या करेंगे आप? ऐसा तो मैंने कुछ लिखा नहीं है उसमें, सबसे पहली बात कि उनको प्रॉब्लम आ जाए कि भाई रिबेलियस हो जाना है, नहीं करना है. इनफैक्ट उसमें सारे ऑप्शंस एंड सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. आपकी आवाज कट रही है. कट रही है. बस इतना इज इट सुनाई ओके दिया नाउ? कि आपकी किताब में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, फिर वो कट गई आवाज. हाँ, so based on those permutation combinations, no, one can decide what they choose to do. ठीक है, उनके लिए सारे रास्ते ऐसे खोल दिए गए हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर इन माय बुक सेज फैमिली इक्वेशन. ठीक है, तो उस फैमिली इक्वेशन में बहुत सारे चीजें हैं जो आप अगर पढ़ेंगे तो शायद रिलेटेबल लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है जिसमें आप शादी करके गए हो फॉर अ वुमेन, ओके, और वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है,
ठीक है। सो आपके हेल्थ केयर वाले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको समझने वाला कोई नहीं है वहां पे, सो दे विल नॉट नो हाउ इम्पोर्टेंट योर वर्क इज टू यू एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल you can get once you get into that profession. So, and another option is if you go into a family where there is a doctor or somebody who is into healthcare who will understand your perspective of being into a healthcare as a doctor. सो वहां पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा आपके लिए कोई खड़ा भी हो जाता है, थोड़ा कुछ कम ज्यादा फेर बदल कुछ चल जाता है वैसे. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू आर चूजिंग टू गो, एंड इफ यू आर ऑलरेडी इनटू दैट देन हाउ टू नेविगेट, दैट इज व्हाट इज देयर. तो अब जैसे आप फुल टाइम डॉक्टर हैं, है ना, और आपने ये बुक भी लिखी है और फिर आप मतलब आपका ये करियर पाथ भी है, तो हाउ डू यू सी इट कि अभी जैसे आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि देयर आर पीपल हु हैव लेफ्ट एवरीथिंग व्हाट दे वर डूइंग, सो लाइक पीपल हु वर लाइक टीचर्स or in other professions they have left everything and they are completely focusing on writing to make writing and being an author as a career. So how do you see it? I mean, do you want yourself to be known as a doctor or you want yourself to be known as an author? Author doctor would be a better combination rather than just choosing one of that, Okay. because I'm incomplete without either of that, to be very honest. And अगर मैं अपने आप को सिर्फ डॉक्टर कहूँ तो ऐसा हो जाएगा that I'm keeping all my knowledge to myself. If I don't give it out to the world, it's hardly making any sense for me to have it. Okay. And if I'm just an author, then I'm not a doctor. तो फिर मैं लोगों की हेल्प कैसे करूँ, सेवा कैसे करूँ, हाउ डू आई मेक अ चेंज इन द वर्ल्ड एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी, तो वो हिसाब से दोनों ही रोल्स मेरे इंपॉर्टेंट है. आई कैन नॉट चूज वन ऑफ दैट. तो आप एंड आपको लगता है कि बीइंग अ डॉक्टर एंड कंटिन्यूइंग टू राइट एज एन ऑथर, आप दोनों फील्ड्स को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मतलब आपको जितना लिखना है, जितना आपको लोगों तक पहुंचना है, अभी जैसे आपने बोला कि आई वांट टू बी एबल टू हेल्प पीपल विथ योर करियर एज अ डॉक्टर एज वेल एंड विथ योर पैशन एज अ ऑथर एज वेल, राइटिंग एज वेल, एंड योर बुक क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट दैट. तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर एबल टू डू जस्टिफाइड दैट यू आर एबल टू क्या बोलते हैं उसे, कि यू आर एबल टू जस्टिफाई योर बीइंग एन ऑथर एज वेल, कि आपको ठीक है मैंने इतना कर लिया काफी, अभी 100 लोगों ने पढ़ ली मेरी किताब काफी है, या फिर यू वांट दैट मैसेज टू रीच आउट टू 1,000 पीपल, 10,000 पीपल. तो अगर आप फुल टाइम राइटिंग करेंगे, फुल टाइम ऑथर बनेंगे, तो मे बी यू आर एबल टू रीच मोर पीपल. आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है? see, primarily I am a doctor. So Yeah. what happens is when I am a doctor, I get to have 1,000 experiences every day by meeting hundreds of people in my hospital. उनसे जो knowledge मिलती है मैं उसको books में filter करके लोगों तक पहुंचाती रह सकती हूँ अगर if I continue to be a doctor. If I don't be a doctor, then मेरा knowledge का जो स्रोत है ना वो stunt हो जाता है. ठीक है. सो मेरे पास जितनी पढ़ी हुई नॉलेज है वो उसको मैं बुक में उतारने के बाद में देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव मोर नॉलेज आफ्टर दैट, या फिर मुझे ढूंढने पड़ेंगे सोर्सेस. अभी मेरे पास एक रेडी सोर्स है विच आई एम चैनलाइजिंग इनटू माय बुक्स. ठीक है. बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, यस दैट इज वन ऑफ द गोल्स, बट देन दैट विल कम विद टाइम. जैसे जैसे बात फैलेगी, जैसे जैसे हमारे ऐसे इंटरव्यूज चलते जाएंगे, people will get to know about these things, and if they take to it, if they relate with the book, if they find that connection, they will keep on reading. I don't have to push people to read it because it has to come from within. अगर वो पहुंचे उन तक और वो और लोगों तक पहुंचाए, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, सोने पे सुहागा. ठीक है. बट इसको प्राइमरी गोल मान के एक ही तरफ झुकाव ला लेना इज नॉट द वे टू गो. दैट इज व्हाट आई फील. No, I think well said. To be honest, this was a really good understanding, what clear understanding you have. मतलब आपको clear है कि you are using those experiences to put them into a book and then further help other people as well. So I think that's very commendable. तो तो अभी अभी और कुछ लिख रहे हैं आप? अभी और कुछ लिख रहे हैं इस मार डोंट गो के बाद? Yes, there are a few books lined up. I want to keep it hush hush, so I will not give you the details. But yes, there are other books coming up which are based on health of professionals.
There is something about work-life balance, and a few more. I soon enough. और Something about happiness. yeah, no, I think they are all very important topic, healthcare profession. So आपका आपका पब्लिशिंग का कैसा रहता है? I mean, do you have a publisher? Who is your publisher? या फिर how do you get yourself your books out in the market? So I had taken help from Adyen Books, and they helped me to, kind of hand holding to get my book self-published in a way. So they are there as a publisher, but it's there on my Amazon. So ebook hai, paperback hai, and that way it is. Okay, And probably that's the way I'm gonna go in the future also, because it's kind of convenient. yeah, I'm sure. But आपको ऐसा लगता है कि अगर ट्रेडिशनल पब्लिशर के थ्रू आप अगर जाओ, लाइक ये जो बड़े पब्लिशर्स हैं, रूपा है, हार्पर कॉलिंस है, अगर आप उनके पास जाओ तो आपके बुक की रीच ज्यादा होगी, या फिर यू आर ओके वे यू आर? See, for starting out sake, this is good. And I want my work to talk for me rather than me, 10 लोगों के हाथ पैर जोड़ो, मेरी book ले लो, those kind of things. I'm not that kind of a person. If you like me, you take it. If you don't like me, it's okay. नहीं, पर वो आपकी बात सही है, पर वो वैसा रहता है ना, जैसे अभी आपने एक बड़े पब्लिशर के साथ काम किया एंड दे आर ब्रिंगिंग योर बुक आउट, तो एक टैग टैग के साथ वो क्रेडिबिलिटी भी जुड़ जाती है, तो Absolutely. They have to see me as a credible person in the first place so that I don't face many hurdles which newbies would face. yeah. Okay. There are people who would go for traditional publishing thinking that, self-publication may you might get some low quality books and all those things. But what happens is that मेरा पर्सनल ऐसा है, मतलब दैट इज पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ मी माई सेल्फ, कि आई हैव अ वेरी कीन आई फॉर डिटेल्स. सो मैं बहुत ही बारीकी से अपने काम को देखती हूँ. आई वुडंट कंपेयर इट टू अदर पीपल. ठीक है, माई बुक विल हैव सर्टेन इम्परफेक्शंस, बट दोज इम्परफेक्शंस आर एक्चुअली मेकिंग माई बुक यूनिक. ठीक है, एंड इट विल नॉट बी इन द टर्म्स ऑफ प्लेगियरिज्म, इट विल नॉट बी इन द टर्म्स ऑफ ग्रामर. वो सब हटा के अगर आपको कोई और इम्परफेक्शंस मिलती है इन द टर्म्स ऑफ फ्रेजिंग एनीथिंग, मे बी दैट इज जस्ट अ पर्सनल ऑथर्स चॉइस. तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो. मेरी फिर राइटिंग स्टाइल आप चेंज कर दोगे जस्ट टू सूट सम पीपल्स टेस्ट. आई कैन नॉट डू दैट. देन उसमें मेरा कोई सिग्नेचर रहा नहीं. ओके, सो दैट वे इट बिकम्स के अगर मेरी स्टाइल किसी को पसंद आ जाती है एंड इन द फ्यूचर somebody picks it up, well and good. If not, it's okay, I'll continue this way. It does not have to be the best, but at least it has to be good enough that will bring change to people's lives. आई थिंक मैम आपने दो चीजें बहुत अच्छी बोली है. पहली चीज तो ये है कि एक तो पहली चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी फेवरेट बुक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है. सो तो आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी तो होगी, राइट? डेफिनेटली आपके जो वर्ड्स Yes. i I really hope so. राइट, तो I think you should read it to tell me, give me your honest feedback maybe someday. या डेफिनेटली. तो बेसिकली क्या है, आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली जो मेरे जैसे ऑथर्स को स्ट्रगल होता है समझने में, वो ये कि instead of running behind the big publishers, instead of running behind the name, let the name come to you, let the fame come to you. आपने बोला कि आप establish करो अपने आप को, and then those things will come automatically. So I think that is very very important. तो another thing which I want to ask you is, अभी इंडिया में साल भर में पूरे वर्ल्ड में there are like 10 lakh books which are published. अपने इंडिया 1000 बुक्स पब्लिश है, सब मिला के, सेल्फ पब्लिश, पब्लिशर, सब मिला के. तो आपको कैसे लगता है कि आपकी किताब स्टैंड आउट करेगी या फिर रीच आउट करेगी उतने लोगों तक? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि एक बहुत अच्छी किताब होती है लेकिन अब किसी को पता ही नहीं है उस किताब के बारे में, तो फिर लोग पढ़ेंगे कैसे? तो Right. आपको स्टैंड आउट करो, हाउ डू यू स्टैंड आउट योर बुक इज द की क्वेश्चन. Okay. That's a very good question actually. See, what happens is, अगर आपको कोई चीज पे भरोसा है ना, तो वो चीज को उभरने से कोई नहीं रोक सकता. Why I'm saying this is because आप इतने भरोसे से ही उसको लोगों के सामने लेकर आने की हिम्मत रखोगे. भरोसा होगा नहीं तो जैसे तैसे लिखने वाले तो वैसे ही बहुत बैठे हैं. बट इफ यू रियली पुट योर हार्ड वर्क इनटू इट, वो दिख के आएगा, बुक के कवर पे ही दिख के आएगा.
ठीक है। दूसरी बात, ये जो बुक है, दिस बुक स्पेसिफिकली इज, आई कॉल इट अ पायनियर बुक। व्हाई? बिकॉज आप पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च कर लो, कोई भी बुक ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो डॉक्टर मदर्स की लाइफ को दर्शाती हो या उसके ऊपर खोल खोल के लिखी गई हो, है ना? यू विल नेवर फाइंड एनी बुक unless it is based on like reviews of certain lot of studies and एक टेक्स्ट बुक्स टाइप की बना दी है, जो आपको बताएगा कि डॉक्टर मदर्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आते हैं, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो इन आवर कंट्री। ये अगर आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है, तो फिर यू हैव जस्ट दिस ऑप्शन। व्हेन यू हैव दिस ऑप्शन, व्हाई नॉट गो फॉर दिस? आई थिंक द मेन थिंग इज आपने एकदम निश में भी निश ढूंढा है, लाइक डॉक्टर्स में भी डॉक्टर मदर ढूंढा है, अपने कंट्री का जो पर्सपेक्टिव है वो दिया है। सो आई एम श्योर people are I think as an author, as a writer, feedback is very important, right? Yes, that, अभी जब that's correct. जब मैं कुछ लिखता हूँ या फिर मेरी जो बुक आई है अभी, उसके बारे में जो लोग मेरे को आके बोलते हैं कि यू हैव डन अ रियली गुड जॉब, आई मीन वी रियली लाइक योर बुक, लेकिन आपके केस में मेरे ख्याल से एक लेवल ऊपर होगा, राइट? पीपल वुड कम एंड टेल यू दैट ओके आई लाइक योर बुक बट दिस हैज मेड अ डिफरेंस इन माई लाइफ, क्योंकि मैं जो लिख रहा Yes. हूँ वो फिक्शन है, आप जो लिख रहे हो वो नॉन फिक्शन रियलिटी, हाउ टू डील विद प्रेजेंट सिचुएशंस है। तो ऐसा कोई वाकया बताइए जहाँ पे कोई आपके पास आया हो, आई हो, उन्होंने बताया हो कि आपको इसके बुक के कारण ये मेरा लाइफ गॉट चेंज और लाइफ गॉट इम्प्रूव, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? There are lot of people. मैं आपको एक असली बात बताती हूँ। हमारी फील्ड में कैसा होता है पता है? जब हम लोग एमबीबीएस के बाद में नीट देते हैं ना, तो टू गेट इनटू अ पीजी कोर्स, टू गेट इनटू एमडी और एमएस, तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स, दे लाइक टू रीच आउट टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड द रेजिडेंट्स वर्किंग इन दोज हॉस्पिटल्स इन देयर चोजन फील्ड्स, टू आस्क देम अबाउट हाउ देयर लाइफ वुड बी एज अ रेजिडेंट इफ दे जॉइन दैट हॉस्पिटल। ठीक है? तो वेल इन एडवांस वो लोग रिसर्च करके रख लेते हैं टू वे देयर ऑप्शंस। तो अब पता है, ठीक है, एमडी तो सब जगह करना है, ग्रोइलिंग लाइफ होने ही वाली है, नो डाउट अबाउट इट, बट यू कैन चूज योर बैटल्स, नो? सो दे ट्राई टू चूज देयर बैटल्स। तो ऐसा ही मुझे एक मैसेज आया अभी रिसेंटली of a lady. She was MBBS and she had given her NEET, and she was approaching me to ask if the institute that I did my MD from, which is Tata Hospital, I think you know it, right? So Tata Hospital is a premier cancer center in India, in Mumbai. So what happens is वहां पे काम करना बोले तो एक privilege भी है और एक bane भी है। इट्स लाइक अ बून एंड अ बेन टुगेदर। सो ऐसा हो जाता है कि खुशी इस बात की होती है कि यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट इफ यू हैव टू वर्क योर एस आउट। सो देयर इज नो बेटर वे टू पुट इट। सो इसमें ये हो जाता है कि हम वो कर पाएंगे या नहीं, एवरीबडी थिंक्स they might have the rank, they might have the potential, but maybe they just need an affirmation for that. So उस एक लेडी का जो मुझे मैसेज आया, she was asking me कि will I be able to go through all that training and all. तो I gave her my example. ठीक है, I have done this and all the perspectives के क्या होगा जब तुम actually आ जाओगे यहाँ पे. I gave her that notion. So she was so happy. She picked up my book, she read it, and then she dropped a message to me, and she told me that being a lady, being a mother, now she has some confidence that maybe if I have done it, she will be able to do it that way. So that was a big inspiration for me, and that was the only message, I'll tell you, that was the only message which I have ever chosen to put up on my WhatsApp status. नहीं तो मैं इस तरीके से कभी अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनती हूँ, no. But that was something which really touched my heart. तो मैंने सिर्फ उसका वो स्क्रीनशॉट लेके मेरे स्टेटस पे लगाया था for the people to see कि yes, ठीक है, there is something that I am doing right. No, I'm sure you're doing many things right. So what advice will you give to people who have joined or who will watch this video later on, uh, in their journey, in their author journey, in their writing journey? So if you have
be a writer, if you there are two opinions now. Matlab, there are two ways to go here. One is either a person is becoming a writer or thinking of becoming a writer, and the other one is who has just become one. तो जो बन चुके हैं उन लोगों को तो सिर्फ अपना परसिस्टेंस लेवल जो है वो बस जारी रखना है, बिकॉज अदरवाइज लिंक टूट गई, अगर वो पैशन चला गया, then it becomes very difficult to get it back. And for the people who are actually starting out, for them I have to say that they need to push aside all their phobias, because starting में तो लगेगा to step into uncharted waters. बट अगर वो एक बार उतर गए वो पानी में तो उसके बाद में तैरना अपने आप सीख जाएंगे. बट वो उसके लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी शुरुआत में, और उसके लिए जो है अगर कोई हेल्प मेरी तरफ से भी लगती है तो आई एम ऑलवेज देयर. That's a very kind of you. आपकी ये किताब कब आई थी? मार डोंट गो कब आई थी आपकी किताब ये? दिस वाज रिलीज्ड इन May this year, May of 2023. वो मतलब अभी 6 months. Yes, 15th May was actually my son's birthday. So मैंने बोला I'll just keep it on that day. It couldn't be a better day. There couldn't be a better day for this. Of course. So when you look back in these 6 months to what you have achieved, what feedback you have got, what connections you have made. So I guess two questions. First, how satisfied are you with the journey? Like, were there any things which you could have done differently, or things which could have done more, या फिर कुछ जो चीजें आप नहीं करना चाहिए था आपको, so something like that, or how do you see this? I mean, second question is, how do you measure success of your book? When will you say कि okay, my book is a successful book in my eyes or in world's eyes? Can you come back to the first question? Okay, so first question was, अभी आपकी किताब को आके 6 महीने हुए हैं. So when you look back in these 6 months, what are the things which you could have done differently, or what are the things which have done more? या फिर I mean, that's the idea. Yeah. So see, now that I go to see, I know that I wouldn't have done anything differently, to be very honest. कुछ नहीं, जो है वो बेस्ट है. अगर वो बेस्ट नहीं होता तो ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ हर्डल्स लाके मुझे उसकी तरफ ढलवाया होता कि I need to still do that. But because वो साकार हो पाया and now it is successfully in the market, I would say कि जो है वो ही बेस्ट है. Not because there are no imperfections, होंगे भी शायद, कुछ लोग जो बारीकी से पढ़ते हैं वो ढूंढ के निकालेंगे भी, but probably those were just meant to be. So I'll just let it be. It's perfect in my eyes. I'll just let it be. Okay. Secondly was what was the second question? Sorry. Second question is, how do you measure success of your book? Yes. So see, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि सक्सेस ऐसा हो जाए कि मैंने बहुत सारी hundreds and thousands of copies बेच दी, सो वो जो है मेरे लिए बहुत सारा पैसा जिसने जनरेट किया वो मेरे लिए बेस्ट है. कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि उसने मुझे बहुत सारा फेम दे दिया तो मेरे लिए वो बेस्ट है, पैसा ना भी मिला हो तो चलेगा. कुछ मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि सी, पैसा इज नेसेसरी, फेम इज नेसेसरी, नो डाउट अबाउट इट, बट देयर इज वन थर्ड थिंग विच इज वेरी वेरी नेसेसरी, इज मेंटल सेटिस्फैक्शन. मेंटल सेटिस्फैक्शन मुझे कब मिला या मिलेगा इज, इवन इफ आई हैव टच्ड वन लाइफ, जो मैंने अभी एक इंस्टेंस बताया, मेरे लिए वो भी काफी है टू से दैट बुक इज सक्सेसफुल. क्योंकि किसी ना किसी तक पहुंचना जरूरी था, किसी ना किसी के दिल को एहसास दिलाना जरूरी था कि वो अकेले नहीं है दुनिया में, जो ये सारी चीजों से गुजर रहे हैं, जो झेल रहे हैं बहुत सारी चीजें जो शायद दूसरे लोग नहीं झेलते हैं उनकी जिंदगी में. और ऑब्वियसली अगर उसने एक ने अगर पढ़ा है तो वो और 10 लोगों को भी बताएगी, और वो 10 से और 10 तक फैलते ही जाएंगे. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट. As long as it touches the people's lives, that is what matters the most to me. And ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बार पे आके रुक जाएगा. If someday some other person discovers this who is totally unknown to those other people who did it in the past, doctors तो बनते जा रहे हैं, ladies doctors are rampant because it becomes necessary for these days to get on to these duties, क्योंकि सभी के लिए पैशन इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है, कुछ अचीव करना इंपॉर्टेंट है. तो as long as there will be women doctors, this book is going to have relevance. Okay, I mean, that's a very good thing.
I think I want to touch base upon the initiative which you are taking in your college or your hospital as well. I think अपनी briefly उसके ऊपर बात हुई थी पहले. So I think that is very empowering initiative in itself. थोड़ा उसके बारे में बताइए जो book club आप अपने स्कूल हॉस्पिटल में जो चालू कर रहे हैं. At this point, because it's not official, so I can't give you in-depth details about it. But yes, the place that I'm working currently is called SMBT Hospital. It's based in the area called Dhamangaon Ghoti, Nashik, and it's kind of a tribal area. So, in the area of North Maharashtra, this is the biggest hospital that there is for, especially for people like these. So, it's a 1,000-bedded hospital, a charitable one. सो इससे ये हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हैं एंड दीज एम्प्लॉयज आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दीज बैकग्राउंड्स. I wouldn't say it's a bad thing, but a lot of people are from farmers families and उनके लिए पढ़ना बोले तो एक प्रिविलेज हो जाता है. सो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं टू गिव देम अ पुश टू रीड मोर, टू लर्न मोर, टू गेन नॉलेज एंड स्प्रेड इट आउट इन द वर्ल्ड while working here. Okay, so simultaneously आप एक काम करने आते हैं एंड दो बेनिफिट्स लेके जाते हैं. पैसा तो मिल ही रहा है उनको काम करते करते, नॉलेज भी मिल रही है. So there's nothing better than that. So वो हिसाब से once we set it up, we'll be starting it out in phases, and little by little we will be introducing the activities like book club meets and online offline या फिर जैसे भी हो पाए तो वैसे author meetups and author mentorship programs, all those kind of things would be taken into consideration little by little. It's kind of a stepwise approach that we are going to have, and let's hope for the best. I think this is very important because I can see a lot of benefits out of it. So first, you are reaching out at the grass level. You are showing the people that there can be a different perspective, different living situation as well. So I think all in all, it's like a victory in itself if you are able to impact lives through that as well. So if you want to, okay, so coming back to you again, if you want to summarize your life in one word, what word would that be? Ongoing. चालू है अभी भी, चलते जा रहे हैं. I think that's an important thing. So we'll do like a rapid fire round, quick one word answers. Okay. Sub audience say, I'm just requesting if you have any questions for ma'am, just please start typing in the chat box so ma'am can answer the questions. In the meanwhile, we just go through this rapid fire round. If you have any questions, just type them so that we can take the questions after the rapid fire round. Okay, so rapid fire round. Quick answer. Texting or talking? Talking. Your first celebrity crush? I don't want to answer. I'll just give you the initials MS. I will just give you the initials MS. But he's not a cricketer. Oh, okay. I was thinking Mahendra Singh Dhoni, but okay. Yeah, but no. Okay, your favorite junk food? It has to be ice creams. Because being a doctor, you have to be careful. Patient. I know, but ice creams are my weak spot. Okay, so do you watch, Mogambo or Voldemort? Have you read Harry Potter series? I've seen the movies. I'm not a very big book buff. Okay. So, none. There has to be a third option. I'm not a negative person. I will never choose negative people. Okay. Okay. But it's not negative, no. Mogambo is a character. He's a iconic character in Indian cinema. Iconic character, iconic villainous, negative character. No, thank you. I'll pass. Okay, fine. So TV or books? Both. It has to be a balance of both. To be a balance of both. Okay, all right. So look, ma'am, thanks a lot for taking the time out to have this session with me. I actually learned. The pleasure's all mine. Many things I have learned as well. If there are any questions from the audience guys, please ask. If not, then we'll close the call. Ma'am, your final thoughts before we close? I'll just put a very
shameless plug, book पढ़ो जाके. Definitely. The reason being I'm being so pushy about it is, see, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर्स के बारे में लिखी गई है तो सिर्फ डॉक्टर्स ही पढ़ना चाहिए, वो भी डॉक्टर मदर्स. ठीक है, द वुमेन हु आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स कैन ऑल्सो रीड इट, बिकॉज वो उनके जिंदगी में पड़ाव आने ही वाला है कभी ना कभी. The women who are now become doctors but not yet become wives or mothers, for them also it has a lot of relevance to choose their options, carefully, at their own risk, obviously. Then the women who are now doctor mothers also need to read this, because obviously they are going through all these things, so they'll find a lot of relatable things. Plus, the men who are related to these women also need to read this, because उन I think लोगों को होना चाहिए कि उनकी बीवी बहन जो भी है उनके घर में जो लेडी डॉक्टर है वो सोचती क्या है, उसके ख्याल कहाँ जा रहे हैं. Probably it gives them a gist about how to deal with them if they are feeling low, if they need something, those kind of things. So it's not just having relevance to doctor moms, it holds relevance to all working doctor mothers or those who would be, and their friends and so, relatives. but I think this book will find resonance to all working women. Yes. In fact, Actually, it will, but there are certain examples which are specific to doctor mothers, so maybe they might not relate to yeah, that. But yes, working mothers के लिए भी कुछ chapters जिसमें इतने important है कि मैं उसके लिए बता ही नहीं सकती. I mean, if you just pick up the book and read the index, maybe they'll get to know what it holds for them. yeah, yeah. Well, guys, whoever has joined or whoever is listening to the book, please get this book. Ma'am, if you can show the book, Ma Don't Go. Yeah, please pick this book up, and then I hope and we hope that you get to learn from the book and from the interview. Like, I am quite inspired by your work. So again, thanks a lot for joining. Uh, Wish you all the best. Thank you. Thank you. Bye.